बेंगलुरु शहर को केम्पे गौड़ा के नाम से मंसूब किया जाना चाहिए। केम्पे गौड़ा जब इस शहर के बानी हैं तो बेंगलुरु का नाम केम्पे गौड़ा नगर होना चाहिए। उर्दू के मुमताज़ शायर व अदीब खलील मामून ने इन ख्यालात का इजहार किया। तो आपने कहा कि बेंगलुरु का नाम केम्पे गौड़ा होना चाहिए क्योंकि बेंगलोर है, उसकी तारीख हमें सही मालूम नहीं है। कोई कहता है इसका नाम बेंगलुरु था, कोई कहता है ऐसा था, कोई कहता था। अंग्रेजों ने उसे बैंगलोर बना दिया, शुमाली हिंद वाले उसे बंगलोर बोलते हैं। ठीक है, अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो सकता है, फैजाबाद का नाम चेंज हो सकता है, तो बेंगलोर का क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या कबाहत है? क्या होना चाहिए? हाँ, केम्पे गौड़ा नगर होना चाहिए। जब उसने एस्टैब्लिश किया टाउन, उसके नाम से, देखिए सिटी का जो इलाका है पूरा उसका एस्टैब्लिश किया हुआ है। बाकी कैंटोनमेंट का इलाका है, अब देख लीजिए फ्रेजर टाउन, विलियम्स टाउन, क्लेरलॉन टाउन वगैरह वगैरह, पूरे अंग्रेजी नाम क्यों है? क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बसाया। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने लाल बाग बनाया। से जैसे खलील मामून सर ने कहा कि मैं सरकार से ये दरखास्त करती हूँ कि बेंगलुरु का कोई अर्थ नहीं है। केम्पे गौड़ा का नाम हमने बहुत देख लिया है, मगर ऐसा व्यक्तित्व मैं समझती हूँ कि ऐसा हीरा हमारे समाज में है, तो इनके नाम से हम बेंगलुरु का नगर नामकरण कर सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है। प्रिंसिपल ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. 11 अगस्त 2022 बरोज़ जुमेरात अल अमीन डिग्री कॉलेज में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस तकरीब में बेंगलुरु के बानी केम्पे गौड़ा पर हिंदी किताब का इजरा अमल में आया। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल ख़ान की सदारत में हुए इस प्रोग्राम में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान ख़ान, चिकपेट के एमएलए उदय गरुड़ाचार्य और दीगर अहम मेहमानों ने हिस्सा लिया। कन्नड़ा के मुसन्निफ़ बीबीएमपी के आला अफसर जयराम रायपुरा ने केम्पे गौड़ा की हयात और ख़िदमत पर कन्नड़ी ज़बान में ड्रामा लिखा है। इस ड्रामे का हिंदी तर्जुमा डॉक्टर शाकिरा खानम ने अंजाम दिया है। ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಯುವಕನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು, ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು 7000 ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆ ಸೆರೆ. ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಿರಿಗೆ ಸೆರೆ. ಸಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ. ओके, आ सिरी सरे अल्लाह। इस हिंदी किताब की रस्म रोनुमाई के मौके पर मारूफ शायर खलील मामून, डॉक्टर शाकिरा खानम ने एक आवाज़ में कहा कि बेंगलुरु को केम्पे गौड़ा का नाम दिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब जयराम रायपुरा ने कहा कि केम्पे गौड़ा ने एक ऐसा शहर आबाद किया जिसमें हर ज़ात, हर मज़हब, हर तबके के लिए पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का माहौल बनाया गया। चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। I thank Sri Jairam and the other authorities who are involved in this for having invited me. मैं जब तारीख का मुताला करता हूँ, उसमें जब केम्पे गौड़ा की तारीख देखता हूँ, तो केम्पे गौड़ा की जो तारीख है, जो उसकी कुर्बानियाँ हैं, जो उसने शहर को बसाने का प्लान बनाया है, मुझे
इसमें कोई शुबा नहीं है। आप इसका ये कर सकते हैं, शाहजहां के बसाए हुए शाहजहानाबाद जो बाद में पुरानी दिल्ली बन गई, जो चांदनी चौक से निकलकर लेफ्ट साइड में आती है, जहाँ पर चावड़ी बाजार है, खारी बौली है, कुचा चेलान, दरीबा कला है, आप उसको देख लीजिए और केम्पे गौड़ा के बसाए हुए शहर को देख लीजिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। केम्पे गौड़ा का शहर जो बसाया हुआ है, मैं वहाँ बचपन से जिया हूँ, वहाँ पर 15-16 साल की उम्र तक, कुमारपेट, चिकपेट, तरकपेट, नगरजपेट और जो है ये तमाम ऐसी ऐसी खुली सड़कें हैं यहाँ पर, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगी। तो ये सिर्फ इतना है कि शाहजहां जो है वो एक शहंशाह था, उसने एक ही काम किया, उसका सिर्फ एक मकसद था कि बहुत बड़ा जो है फोर्ट बना दे। मैं इनडायरेक्टली अगर मैं कहना चाहूँ कि जितने लोग थे, ये जो शहंशाह थे, वो बड़ी हद तक खुदगर्ज थे, जबकि केम्पे गौड़ा ऐसा नहीं थे। ये तो साफ जाहिर है, ये मेरे मुताले से जाहिर होता है। और जिस तरह की कुर्बानी उन्होंने अपने आप को विजयनगर किंगडम को सौंप कर दी और सब्र के साथ वहां रहे 6 साल तक, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। और दूसरी मिसाल यह है कि उर्दू वाले खासकर जब कोट करते हैं तो वो टीपू सुल्तान की एग्जाम्पल कोट करते हैं कि जो उन्होंने 2 बच्चों को यरगमाल रख दिया था वहां पर, लेकिन उससे 1 सदी या 1.5 सदी पहले तो ये काम केम्पे गौड़ा ने किया था। उसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? उसके बारे में इसलिए बात नहीं करते, उसका इल्म नहीं है। इसलिए मैंने जयराम से इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसका उर्दू में भी तर्जुमा होना चाहिए। तो और तारीख जो है, आप कहीं की भी तारीख पढ़ लें, अमेरिका की पढ़ लें, बरतानिया की पढ़ लें, फ्रांस की पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो बहुत खूनरेज है। वहाँ तारीख से खून टपकता है और तारीख में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये खुदा ही को मालूम है। क्योंकि लिखने वाला कौन था? लिखने वाला उसका एक लिखारी था, इसको अदीब कहते हैं। उसने लिखा, उसने अच्छाइयाँ ही बयान की होंगी, बुराइयां नहीं बयान की होंगी। एक बार हम अकबर की बात करते हैं, अकबर को ग्रेट कहते हैं, अकबर द ग्रेट कहा जाता है। इसी तरह अशोक द ग्रेट कहा जाता है। लेकिन अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, मेवाड़ पर हमला किया, राजपुताने पर हमला किया, पूरे राजस्थान पर हमला करके उसने अपने कब्जे में लिया। इसकी बात तो नहीं करते। और अशोका जो है वो अपने पूरे भाइयों को कत्ल करके बादशाह बना, ये बात नहीं कही जाती, क्योंकि उसमें किए आता है एंगल। अशोका का जहां तक ताल्लुक है, उसमें आता है उसका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाना। अकबर की जब बात आती है तो उसकी बात आती है दीन इलाही की, कि भाई उसने दीन इलाही का किया। ये केम्पे गौड़ा ने ऐसा कुछ नहीं किया ना, ऐसी तारीख है नहीं ना, आपने सुना नहीं हो, ऐसी कोई चीज तारीख नहीं है। तो उसका एहतराम दिल में और बढ़ जाता है। तो इस सिलसिले में मैं जयराम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पेशकदमी की है इस मामले में। तो आपने कहा कि बेंगलुरु का नाम केम्पे गौड़ा होना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर है, उसकी तारीख हमें सही मालूम नहीं है। कोई कहता है इसका नाम बिंदकालूर था, कोई कहता है ऐसा था, कोई कहता था। अंग्रेजों ने उसे बैंगलोर बना दिया, शुमाली हिंद वाले उसे बंगलोर बोलते हैं। ठीक है, अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो सकता है, फैजाबाद का नाम चेंज हो सकता है, तो बेंगलोर का क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या कबाहत है? क्या होना चाहिए? हाँ, केम्पे गौड़ा नगर होना चाहिए। जब उसने एस्टैब्लिश किया टाउन, उसके नाम से, देखिए सिटी का जो इलाका है पूरा उसका एस्टैब्लिश किया हुआ है। बाकी कैंटोनमेंट का इलाका है, अब देख लीजिए फ्रेजर टाउन, विलियम्स टाउन, क्लेरलॉन टाउन वगैरह वगैरह, पूरे अंग्रेजी नाम क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बसाया। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने लाल बाग बनाया। और ये जगह जो अमीन बैठे हुए हम, हजरत अताउल्लाह शाह शुत्तारी, नबी शाह शुत्तारी को उन्होंने जागीर में दी थी, क्योंकि अताउल्लाह शाह शुत्तारी जो थे उनके खलीफे थे, उनके बुजुर्ग थे। कहा जाता है कि अताउल्लाह शाह को शुत्तारी से उन्होंने जाके पूछा तृष्णापल्ली जंग जाने से पहले कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो उन्होंने कहा मत जाओ। तो ये गए, वहां पर जाके शिकस्त हुई इनकी, जख्मी हो गए,
फिर वापस आकर वो उनके मुरीद हुए। ये भी कहा जाता है कि लाल बाग उन्होंने उनके लिए बनाया, अपने दादी के या नानी के नाम पर, जिनका नाम लाल भी था। तो मतलब क्या है, ये जो अच्छा काम है इंसान का वही याद रखने के काबिल है, जो बुरा काम है उसको हम याद नहीं रख सकते। मैं जाती तौर पर न लाल किले से मुतासिर हूं, न ताजमहल से मुतासिर हूं। इन इमारतों का हम क्या करेंगे जब हजारों लोग गरीब हैं, खाने को उनको खाना नहीं है। क्या शाहजहां ने ऐसा कोई काम किया कि जो जिससे लोग भूखमरी से नहीं मरे, या औरंगजेब या जहांगीर ने कोई ऐसा काम किया? ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो मतलब यह है कि भाई आपका जो अच्छा काम है वही काम जिंदा रहता है। इंसान की जिंदगी बहुत महदूद है, 90 ईयर्स आप लिएंगे, 100 साल जिएंगे, 120 साल जिएंगे, लेकिन आपने लोगों के लिए क्या किया है और अपने आप को किस तरह से, क्योंकि जिस्म तो फानी है, जिस्म तो फानी है, और आप कब तक जिंदा रहेंगे, आप कब तक खाएंगे ये करके? आप अब कहाँ चला गया आपका लाल किला, कहाँ चला गया कोहिनूर? कोहिनूर कहाँ है? अंग्रेजों के पास है वो। ठीक है, ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೇನಿದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೇ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಟ್ಟಣ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚ ಭಾರತೀಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೇ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅದು. ಅವತ್ತು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 176 ಎಕರೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪೇಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕುರಿತು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಸೆರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು ಸಿರಿಗೆ ಸೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಕಿರಾ ಖಾನಮ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಉರ್ದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಏನೊಂದು ಉದಾತ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಉದಾತ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ. इस किताब को जयराम रायपुरा सर ने लिखा है। ये बहुत ही अच्छी किताब है। हम लोग केम्पे गौड़ा के बारे में हर जगह उनका नाम रखकर, उनकी मूर्तियां बनाकर हम लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं ये चाहती हूँ कि केम्पे गौड़ा ने, उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, किसी भी प्रकार का अत्याचार अनाचार नहीं किया। उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि इंसानियत रहे, मानवता इस संसार में रहे। जिस प्रकार अशोक का मन परिवर्तित होकर उसने कलिंग युद्ध के बाद अपना मन परिवर्तित कर लिया, अगर चाहता तो वो कलिंग युद्ध रोक सकता था। मगर यहाँ पे केम्पे गौड़ा ने युद्ध करने के बजाय, वो एक छोटे से सामंत थे और विजयनगर की परंपरा तो पूरे विश्व विख्यात थी। उस परंपरा को चुनौती देना अगर हो सकता तो दे सकते थे, मगर उससे काफी जानो माल का नुकसान होता था। तो उन्होंने क्या किया, जब अपने पुत्र को बंदी बनाकर भेजने की जब बात आई तो उनकी दूरदृष्टि बहुत गहरी थी। अगर वो नौजवान अगर चला जाएगा तो समाज को कौन चलाएगा, राज्यभार कौन करेगा? उससे बेहतर है कि मैं ही अगर बंदी चला जाऊं तो मेरी देश की जिम्मेदारी या उनके राज्य की जिम्मेदारी एक नौजवान पर पड़ेगी। ये उनकी दूरदर्शिता थी। मतलब इससे ये पता चलता है कि एक समय के बाद हम लोग हमारे नौजवानों को जिम्मेदारी देने की हमें कोशिश करना चाहिए। ये कैंपे में काफी इतिहास, थोड़ी बहुत जानकारी रखती हूँ, मगर ये नाटक मेरी आंख खोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्तित्व अधिपत बड़ा कत्लो अंतरला, ऐसा व्यक्तित्व यानी अपने घर का चिराग ही अंधेरा देता है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे समाज में, हमारे पास, हमारे ही संस्कृति में होते हुए हम लोग कहाँ बड़े बड़े व्यक्तित्व को हम कैसे ढूंढ रहे हैं। तो केम्पे गौड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व था जो इंसानियत की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए वो खुद एक बंदी बन के चला जाता है, युद्ध नहीं करता, हिंसा नहीं करता। ये है। और दूसरी बात यहाँ पे, ये जिस तरह कुवेंपु ने कहा कि सर्व जनांगद शांति तोटा, तो
अगर केम्पेगौड़ा अगर चाहते तो हर जाति के आधार पर एक एक राज्य या एक एक इलाका बना सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक एक कारीगर के हिसाब से, जैसे कि तरकपेट है, बड़े पेट है, अक्की पेटे है, कुंभार पेटे है, इस तरह यानी कसूबी ना आधार पेशे के हिसाब से उन्होंने राज्य अपने अपने इलाके का ये किया। और दूसरा, हर चीज उनकी दूरदृष्टिता बहुत गहरी थी, यानी उन्होंने बहुत आगे का सोचा। हम लोग देख सकते हैं बॉम्बे, हम कहते हैं कि बहुत ही विश्वविख्यात नगर है, मगर बॉम्बे की सीमा बहुत छोटी है। मगर ये केम्पेगौड़ा की जो दूरदृष्टिता की, ये जो बेंगलुरु की सीमा जो है वो असीम है, ये और बहुत बढ़ सकता है। वो अपने में सब कुछ बनाने की कोशिश, लेने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पुस्तक के माध्यम से सर की अनुमति से, जैसे खलील मामून सर ने कहा कि मैं सरकार से ये दरखास्त करती हूँ कि बेंगलुरु का कोई अर्थ नहीं है। केम्पेगौड़ा का नाम हमने बहुत देख लिया है, मगर ऐसा व्यक्तित्व मैं समझती हूँ कि ऐसा हीरा हमारे समाज में है, तो इनके नाम से हम बेंगलुरु का नगर नामकरण कर सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है। और ये पुस्तक हिंदी की है, और हिंदी पूरे देश की भाषा, कन्नड़ भी हमारे देश की भाषा है। ये काफी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कन्नड़ की मिट्टी की जो खुशबू है ये पूरे देश में फैलने की कोशिश करे। ये मेरी बात है। धन्यवाद। जी, केम्पेगौड़ा के बारे में हम कहेंगे तो यहाँ पे मैं जो ये नाटक का अनुवाद करते समय मुझे कहीं भी इस तरह की भनक कहीं भी नहीं लगी। उनका उद्देश्य मतलब यहाँ पे है कि आदमी जब आगे की सोचता है तो एक आंधी की तरह उसको आगे जाना पड़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तरक्की करने का होना पड़ता है। तो केम्पेगौड़ा की ये विशेषता ये है कि वो सबको साथ लेके जाता है। ये विशेषता है, इनको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं कहता, क्योंकि और ये बहुत बड़ा अच्छा नायक भी था। कालन्ना बोल के किसमें चरित्र आता है, तो जब बाहर वाले आके उस पे हमला करते हैं, हमला करने की बात होती है, तो वो लोग कहते हैं कि हम पलायन कर लेंगे, हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर दूसरा राजा होता तो उन्हें दंड देता या उन्हें कारागृह में डाल देता, आप इतने गद्दार हो। मगर केम्पेगौड़ा की इंसानियत, आज के नायकों में ये विशेषता होनी चाहिए। वो कहता है अच्छा आप जाते हैं, कहीं कहाँ जाएंगे, तो बेहतर है आप चंदपटना चले जाइए, वहां पे आपके लिए सुरक्षित है। ये ऐसा कौन बोलेगा, कौन सा राजा बोलेगा? तो ये केम्पेगौड़ा मैं समझती हूँ कि आज के नायकों के लिए एक मार्गदर्शन की तरह इसको रख ले और इस तरह का शासन करे, तो शायद हमारा देश और आगे बढ़ पाएगा। ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಸರ್ವಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಯುವಕನ ಬದುಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಗರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರೋರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಗರ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಈ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ಅವರೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ we look it from the different angle. History is also written by individuals, and you cannot judge by reading history which is correct, which is wrong. But history is essential. Without history, history is written because nowadays we think history is boring. History is even in education, even in subject as I think it is least important for history. But history is necessary because it is a guide for the humanity. How do you learn? Good. Mahabharata may be a myth, maybe an epic. But reading Mahabharata, you can conclude various things. The fight between truth, fight for truth. And there are several other historical books which you can universal. God has given everybody the power of thinking. So while reading history, you did not take that itself is the right thing, but you can use your thinking capacity to take history and learn from history. History is for always is a guide. I consider history is a guide because we should know what has happened. For example, after another 50, today we are celebrating 75 years of independence. Nehru is a very important, the builder of modern India. He has changed India here. That is in the ancient. Today, if today somebody writes history, they will give our present Prime Minister is the only person who has changed India. That is the history which will be written if it is written today. That doesn't mean that Nehru contribution will be forgotten in history. His contribution is already gone into the history. This is very important, even because there are students. You must know your history, history of your country, history of the world. Today we read American War of Independence, how American Constitution was. All this is there in history. Otherwise, how would we have known? So it is very important for all our present generation, younger generation to know history. I'm also a strong believer, see that the efforts of our grandparents and our parents, they rub off us. So, the intellectual efforts that her grandfather made and her parents made, the result you can see today. That we can know about our local history and relevant. Now coming to Dr. K. Rehman Khan Sahib. He is a philosopher. His ideas were ahead of his times. I used to remember, I think for the past, my father, I'm about 50 years old. But since I remember from the 45 years, when I was in the first class in St. Anthony's, his son was my senior. From that time itself, I know that we are close to his closeness with my father. I don't know whether it is more than 45 years or not. But at least, as far as I remember, 45 years of my father's life, he has been through the state of K. Rehman Khan Sahib. K. Rehman Khan Sahib was a chartered accountant. His life itself is a history. He has come from grassroots, become a CA, built a great, gone on to become MLC, then Member of Parliament, and then a Union Minister in the central government. He has done a lot of work for minorities. When he was here in Karnataka, he did a lot of work for minorities.
In central government, he learned a lot of government. Many of the schemes that are running now, the scholarship schemes, the benefits that you all are getting, are all due to these efforts. My father and my father's family, my wife, my father and my mother, Ansab and his wife, they have done a lot of international trips together. They used to go to all over Malaysia, Singapore, many other places they used to go together. The closeness, that bond was there between our families. I remember that now he used to say to me that how close we were. And my father, every morning, compulsorily, my father used to call him. I used to remember that in the house when we were small, that around earlier we had landlines, we didn't have mobile phones. Till 8 a.m. my father used to be walking around. He didn't want to disturb anybody before 8 because that's a resting time. As soon as it was 8 a.m., the first call used to go to Rehman and ask him for some help in politically to start the Ameen Medical College or the many other institutions that they run today. He used to call him, take his advice. Together, they built up this great Ameen movement. Both of them had great mutual respect for each other. I always remember people used to say how Dr. Ram, because my father was in age, he was a little elder. Khansa used to always be there to help him, and he, as an elder brother, he used to take care of him. That lot of respect and love was there. Now I have a bonding with his son, Mr. Mahmood Ali Khan, who's elder son. Now I have bonding like him. He is like my elder brother, and I take his advice and guidance when we have to take decisions here. As the sir said about knowledge, about gaining knowledge about history, the motto of Ameen is Rabbi Zidni Ilma. Rabbi Zidni Ilma means Lord give unto me more knowledge. That is the motto of Ameen. So knowledge is not only restricted to what you study, it's all over. They should study everything. You study religion, religious books, you should learn Hadith, you learn Quran. Apart from that, you should learn history, everything as much as you can to live a successful life, to have peace of mind. Whatever knowledge you can get, you should gather that. So the motto itself of our college, all of you have to understand is Rabbi Zidni Ilma. There is more. Recently, I sat with Hansa, and he told me a lot of history of Ameen which I did not know myself. How Gausia was started, how Gausia Industrial Makers was started, how my father became my father was made. I didn't know this at all. My father was made. He was taken into the trust and made a secretary. Usually, you get into the trust, be a trustee for 1 or 2 years, then you become the secretary. Sir told me that my father was taken into Gausia Trust as he was taken, itself as he was taken as a secretary. That is the news. Nobody knew about it, only he knew, and he told me. All the great things that have happened for the last 30, 40 years in Bangalore, among the Muslim community, in Karnataka, Hansa is aware. We have to be leaders like him, listen to him, gather information, and this information, this experience will help us lead a more successful life. We have to gain from their experience, not again go through the same part and struggle again. And then learn from experience. When experience is there for us to learn from. Yeah, so this is what I have was able to tell you. Students, I'm very happy that you all are here. I wish you all the best. Study well, work hard. We're all here to make sure that your classes run on time, your teachers come on time. After your studies, that you all get placed well. The school students, we are also doing a lot of programs, so we want all-round development. Ameen is there for service to the community, as no other institution is doing in Bangalore. Whatever the fees that we charge, the kind of commitment that we have, the kind of teachers that we are after you will not find anywhere else. The service-minded, the motto that we have will continue. We continue to serve you, and through you, we would like to see the upliftment of the community and the society. Thank you so much. I was ignorant enough not to know anything about Kempe Gowda. I never knew anything about Kempe Gowda. So, as I knew only after reading Mr. Jairam's book. So, I am thankful to him personally that he could be a hostage of Vijayanagara Empire. It is something which everybody should know, that this was nothing new. Tipu sacrificed, we all agree. He fought against the British and he sent his sons to the hostages. But this act, this type of sacrifice was already done by Kempe Gowda. So he needs an applause on this. It was mentioned in the township which was laid down by Kempe Gowda.
I stayed in Kumbarpet, which is mentioned way back when Kempe Gowda had constructed this city. I used to move around from Kumbarpet to Ragipet, to Old Tarakpet, to New Tarakpet, to Chikpet, Cottonpet, and Dharmaraya, Devasthana, and so on and so forth. When I read about these things, I recollected that I have really lived in the town of Kempe Gowda. And I love that place even today. Now, as a comparison, I would like to say, since immediately after that, I have left for Delhi. And Delhi's old Delhi, which was supposedly constructed by Shah Jahan. We all have seen the Red Fort, how majestic, how magnificent it is. But you see the old Delhi adjacent to the Chandni Chowk. I have moved around all those areas because of various activities I had during those days. My masters, my teachers, literary people, all used to live together. Kaliboli, Kucha Chelan, Chowdi Bazaar, Gali Qasim Jan, etc. etc. I tell you one thing, even today, you go to that place and see what the township laid down by Kempe Gowda, there is no comparison between them. The town which Kempe Gowda laid down has got very good roads, symmetrically planned and things like that, whereas you cannot say the same thing about Old Delhi. This is an honest exception of what has transpired. And incidentally, Shah Jahan came after nearly a century after Kempe Gowda. He assumed the Lal Killa was completed in 1648. Probably after that only the Old Delhi came into being. So, Kempe Gowda, to me, in this bloody history, I should call it, a history full of blood. Kempe Gowda is a gem in that. So, the powers that be in Karnataka have done what all they have had to do. But I really wonder as to why, right in the inception, this town was not named after Kempe Gowda. What prevented the authorities in naming this town after Kempe Gowda? The myth of the town being Bengaluru, to me, is historic. It's only a myth. The story which relates this thing to Veer, what is that, Hoysala king, who came to this thing jungle and he was lost, and some lady offered him Bengal and Veera tree. So that doesn't appear to be correct, whatever it is. The etymology of Bangalore doesn't take us to any place. So what prevented the authorities in naming this town as Kempe Gowda Nagar? You named the international airport, all right, but people who come to international airport only will be knowing about Kempe Gowda. Other people in the country will not know anything about Kempe Gowda unless they come to Kempe Gowda or they come to Kempe Gowda road. So some mishap has happened. So maybe because of some caste orientation, some political compulsions, these things have happened. So even now, the government should think of naming this town. So many towns in this country have been named for nothing. For instance, Allahabad has been named as Prayagraj. What is the basis of that? I do not know. Of course, Faizabad, I can understand, it has been named after Ayodhya because of Shri Ram. Maybe it is a myth, maybe it is correct, we do not know, but things are associated with that. But what prevented this from being named as Kempe Gowda Nagar? There is nothing wrong in that. So even now the authorities should think about that. I also honestly didn't know that the fort which exists near KR Market was constructed by Kempe Gowda. I always thought that it was constructed by Tipu Sultan. It was constructed by Kempe Gowda, but improved upon by Hyder Ali and Tipu Sultan. So it is
I don't know whether there is any improvement in that fort because I have not gone to that place for a long time. Even now, what I request, since Mr. Jairam is in corporation, he is also there with political beings. I request that that fort should be eliminated and the name of Kempe Gowda should be put there. There is no harm in doing that. And even the Kempe Gowda towers, which are there in Lalbagh and all around places, should be illuminated so that people come to know about that. So these are all few requests. In addition, I would like to request that some memorial lectures in the name of Kempe Gowda should be started, whether it is Kandayan Cultural Authority or corporation, where not just on Kempe Gowda's times, but various subjects can be discussed by some eminent authorities. A committee can be formed about that. Last but not the least, I request Shri Jairam to get this work translated in Urdu. Our friend Shri Mahar Mansoor, he has done a lot of translation from Kannada. He can do the job. It's not a very big book. I think it should be done, and it should. The Urdu Urdu knowing people should read it to know the sacrifices of Sri Kempe Gowda. I thank Sri Jairam and the other authorities who are involved in this for having invited me here. Thank you very much. All my dear students, now we have come to the end of this book releasing function. It's my duty to extend vote of thanks to all the dignitaries on the dais and off the dais. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಗರುಡಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅಲಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು read history, think history, and it is very important for our life. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. He talked about Kempe Gowda. Kempe Gowda ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. बेंगलुरु से जुनूबी न्यूज़ की खास रिपोर्ट।